वेरिएबल की कोई मोनो मीन्स वन without addition. Last time we discussed there should not be any addition sign in between. Then we call it a monomial. Single term is there. Whether variable is there or not doesn't matter. Okay, even if it is only 10, then also it is a monomial. You know it. Last time हमने discuss किया था. Today we'll be doing about addition, subtraction, and their multiplication. Okay. For addition, you have to look for. First, I want to take a small example. Adding of expressions. Okay. Addition of expressions. Write down the heading. Addition of expressions. Okay, here you are using polynomials. You know, last time I told you in 8th class we use polynomials, not expressions. Why? Because you do all the expressions with positive power. जिसमें variable की positive power होती है. That's why we call them polynomials. उसका name change कर दिया हमने polynomial. ठीक है, एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट पॉलिनोमियल में पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलिनोमियल. इसका स्पेशल नेम है. सपोज वी आर एडिंग एट एडिशन में, सपोज वी आर टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल 7x square and minus 11x square. छोटा सा मैंने नंबर लिया है. Two monomials are there. We are adding them. Right? In addition, when we are adding them, in the beginning, what your knowledge says that you are putting a plus sign in between them because you are adding. First step is done. First knowledge आपने लगाई कि इनको add करना. That's it. We have put addition sign. Now what to do? We have to add the numbers, right? Not the alphabets. So, after this, आपका स्टेप क्या होना चाहिए? यहाँ पे open the bracket. Open the bracket. Same steps हम बड़ी expressions के लिए भी यूज करेंगे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. You should know the steps कि first time हमने addition का sign लगा दिया. Second time what we are going to do, we are opening the bracket. When we are opening the bracket, we will be doing 7x square minus 11x square. When we have opposite sign, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो वी हैव पुट हियर सिंगल साइन दैट इज माइनस. नाउ you know we add or subtract the numbers, not the variable. Variable will be out. Okay, out means we have taken common. And what we are calculating, addition subtraction किसकी कर रहे हैं? Numbers की. So we are taking 7 and 11. यहाँ पे आपका बहुत इंटेलिजेंट स्टेप जाएगा. यहाँ पे what is that कि आपके पास जब अपोजिट साइन ऑफ नंबर्स होते हैं तो उनको जब ऐड करते हो तो क्या होता है? Can you tell me what you are going to do here? 7 minus 11, what it will be? 7 minus 11. Daffodil section, Pranjal. Please come forward. Ma'am, 5. 5? Will it be 5? Minus 5. Why? Why minus 5? 4. Minus 4, ma'am. Minus 4. Yeah, minus 4. You know, we are subtracting. Yes. Okay, good, beta. Please sit down. 11 and 7 has different signs. एक plus वाला एक minus वाला है. This you read in 6th and 7th की जब opposite sign होते हैं तो उनको हम
माइनस करते हैं, 11 माइनस 7 इज 4, तो आंसर में आपके पास बिगर नंबर साइन आएगा, दैट विल बी -4x²। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, मैंने इसको क्विकली बुला लिया तो इसलिए वो गलती हो रही थी थोड़ी सी, अदरवाइज यू नो इट, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थोड़ा जब भी हम यू नो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर, उसने मेरे को 2 बार 12 बोला, उसने मेरे को 2 बार 5 बोला, व्हाई? बिकॉज ही वाज डूइंग इट क्विकली। You should learn from every act of yourself कि when we do anything in hurry, we might make mistake. ठीक है, तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है, यू हैव टू डू पेशेंसली। ओके, सो 11 माइनस 7 इज 4, और आंसर में आपके पास बिगर नंबर साइन आएगा, सो इट विल बी -4x²। ये जो मैंने छोटा सा हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ये छोटा से क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन में करने वाले हो। यू आर गोइंग टू डू इन 8th क्लास, यू आर गोइंग टू डू बिगर क्वेश्चंस। वहां पे एवरी स्टेप पे आपको ऐसी कैलकुलेशन 2-3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लाइक टर्म्स कंबाइन कर रहे हो, कभी उनको प्लस कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। ठीक है बेटा, सिमिलरली आई वांट टू रिकॉल दिस आल्सो, इफ यू हैव -x², 7x² एंड -11x², व्हाट डू यू डू? फिर क्या करोगे? सेम, दो हमारे पास मोनोमियल है, फिर से दोनों को ऐड कर रहे हो, यू आर राइटिंग इन दिस वे, फिर से इसको ऐसे लिख रही हो। ये बेसिक नॉलेज है आपकी, जिससे आपकी मिस्टेक होने के नहीं चांसेस होंगे अगर आप ध्यान से करोगे। इट विल बी -11 -7 -11x² इज अगेन कॉमन। यहाँ पे आपका इंटीजर चैप्टर यूज हो रहा है, टू सेम साइन, यहाँ पे टू अपोजिट साइन वर देयर, यहाँ पे टू सेम साइंस आर देयर। व्हाट डू यू डू व्हेन सेम साइन कम? You add them. You learned in 7th class. Integer के चैप्टर में आपने सीखा था, you add them, it will be 18, and sign will be bigger number sign, so it will be like this. Please remember, जहां पे स्टार लगाया, these are important steps, जहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं, please remember it. Okay? Addition doesn't mean कि add ही करते जाना है. You have to apply your common sense कि जहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है। ओके, आपने ऑलरेडी किया हुआ है इसको। मॉड्यूल इज विद यू, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें एडिशन है आपकी, सब्ट्रैक्शन है, वट एवर, विल बी डूइंग इट। ओके, तो यू कैन कीप आस्किंग मी इन बिटवीन। मॉड्यूल एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन। या, इन अ स्कूल these many students were enrolled. Okay, अभी these students were enrolled, तो अभी ये नंबर की बात नहीं हो रही है, एक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। पहले आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, अभी आप 8th क्लास में एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉलिनोमियल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक नंबर्स। ओके, स्टार्ट डूइंग। इन अ स्कूल these many students are enrolled and few are boys. Okay, X students are enrolled, I'm telling you in rough. Y are boys, how many are girls? Yeah, that you have to find. छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने सिंपल इक्वेशन में 7th क्लास में भी किए थे। वेरी सिंपल, यू विल से वी आर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, you know we are subtracting, that you know, everybody knows, but किस में से क्या, what you are subtracting from what, that you have to see. Can you tell me? This is a basic thing. Addition you know, subtraction you know, but what to be subtracted from what, problem is there. Okay, row section. Priyansh, बेटी come forward. Priyansh, बेटी come forward. If I ask you, X students are enrolled. Enrolled means total students are there. Y are boys. You are going to find number of girls from here. What you are going to do here then? Question हम बाद में करेंगे.
Yes, beta. What? Second. No, I'm not asking you option, beta. I'm not asking you answer. What you are going to do here? इसमें से क्या माइनस करना है? I'm asking you that. Enrolled means, what do you mean by enrolled? कि total students are X. उसमें से boys are these. Y. How to find number of girls? X minus y. X minus Y. That's why I'm asking you X minus Y. Okay, we are subtracting Y from X. Okay, sit down. You already did this question. So what option is coming? He told me B. तो सबकी B option आ रही है? Have you done it? See, two expressions which are given here. It is, I will do the complete question. This is first question. That's why we are doing it completely. I want to do for those children who don't know. First expression is this, total enrollment जो थी आपके पास, total number of students थे, and from there we have boys, that is 2a square minus 9a plus 2. These are boys. Okay, there are two ways to do. Either we can do in this way. I will be doing both the methods. You can do in this way, 8a square plus 4a minus plus 9 minus 2a square minus 9a plus 2. जो लाइक टर्म्स है उनको एक दूसरे के नीचे लिखा है हमने. a स्क्वायर वाली टर्म a स्क्वायर के नीचे, a वाली a के नीचे और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के नीचे. You know, when you do subtraction, we change the sign of the lower one. It will be minus, it is 2a square is minus, this is minus, ये plus हो जाएगा, ये plus है, ये minus हो जाएगा. Have you done this method? ये column method की है आपने क्लास में? या फिर दूसरे मेथड से किया है in this way only कि डायरेक्टली ब्रैकेट खोल के 8a square plus 4a plus 9, then you open the bracket minus 2a square plus 9a minus 2. Have you done it in this way? Straight way ऐसे किया हुआ है आपने? Raise your hand. Have you done addition and subtraction in this way? Okay, then we'll go this way only. Okay, we'll continue in this way. Okay, I'm erasing from here. I'm not doing it. Let us do in this way only. Right? So you are subtracting. When you are subtracting, it means you are changing the sign of all the terms inside the bracket. Please remember, ये arrow लगाओ वहाँ पे to remember it. Whenever there is a negative sign outside, all the signs will be changed inside. आप देख रहे हो यहाँ पे 2a square was positive, we have put negative here. यहाँ पे negative था, we have put positive. यहाँ पे positive था, we have put negative. तो वो first step में हमने क्या किया है? Open the bracket, which I told you in the first question also. Open the bracket. ये step हमारा follow होगा first step में. Then we will combine the like terms. Bring like terms together. Like terms together. पास लेके आओ जो आपके पास like terms है. क्या क्या कौन कौन सी like है? 8a square minus 2a square इकट्ठा लेके आओ इनको. 8a square minus 2a square. Then we have 4a and 9a plus 4a plus 9a plus 9 minus 2. जो constant है उनको हमने इकट्ठा लिख लिया. Thing is कि we have to put them together so that कोई आपकी जो दूर पड़ा हुआ नंबर है मान लो वो skip ना हो जाए. This type of mistake happens when जब हमारे पास बहुत लंबा क्वेश्चन होता है 2-3 टर्म्स हमारे पास ऐड हो रही हैं, then you make a mistake. And when you solved it together, you found कि आपकी ऑप्शन आ रही है. Which option is coming? Santra section, Pavit Kaur. If you have done, you can tell me the answer.
Ma'am, option number C. Option number C. Yeah, it is correct. It is 6a square plus 13a plus 7. The option is coming. I hope everybody has done. Because this chapter is very easy. Only thing is कि आपकी जो mistake होती है, जो students की mistake होती है, commonly that I'm telling you, 8th class में, what do? They forget to change the sign in between, and they forget one or two terms. जब उनको आप इकट्ठा नहीं करोगे ना, जब तक आप उनको bring together वाला step नहीं करोगे, तब तक आपकी कुछ ना कुछ mistake हो सकती है. By chance, it's not that कि आपको पता नहीं है, knowledge नहीं है, knowledge है आपको, but by mistake you forget एक आधा जो उसमें term है वो miss हो जाती है addition करने में. Okay, so be careful, go slowly. वो mistake avoid करने के लिए what is the trick? Write neatly, write little far off, जैसे मैंने लिखा हुआ है. Second thing is put them in bracket. First expression, first polynomial प्लस और माइनस सेकेंड पॉलिनोमियल, दोनों को ब्रैकेट में डालो, फिर ब्रैकेट को खोलो, खोल के उनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो. अगर ये स्टेप आप फॉलो कर रहे हो ना, देन यू विल नेवर मेक मिस्टेक. ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं. सो डोंट लूज योर मार्क्स. क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. ओके बेटा, आई एम टेलिंग यू वेयर डू द चिल्ड्रन फॉल. वहां पे मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है उनको, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सेकेंड क्वेश्चन इज what should be subtracted from the expression to get another expression? Two expressions are given here. What should be subtracted from? In small classes, आपने बहुत क्वेश्चन किए. What should be subtracted from 20 to get 17? What should be subtracted from 18 to get 5? This that. छोटी क्लासेस में आपने नंबर के फॉर्म में इनको परफॉर्म किया हुआ है. Now you are performing in the form of polynomials. पूरा का पूरा polynomial. What should be subtracted from 20? So 20 will come here. Okay, location भी पता होनी चाहिए कि वो उस नंबर ने आना कहाँ पे है. That is very very important. कई स्टूडेंट्स इसको 20 को यहाँ लिख देते हैं, कई स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं. Take care. Okay. So please start doing. I have given you hint. इसमें से क्या माइनस होना चाहिए. Start doing. Very good. Do it yourself. I will ask you. You know it how to do. You just have to practice it by writing. Okay. I will call the name and tell you. What should be subtracted from do it. Very good. Something is here to obtain minus a square minus b square plus 6ab. आपके पास आंसर ये आना चाहिए. What should be subtracted from this expression, given expression? मैंने देखो बेटा आपके क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट ही डली हुई है, बट यू हैव टू पुट योर ओन ब्रैकेट सो दैट आपकी कोई मिस्टेक ना हो. One polynomial is a single thing. Single. That's why we are putting them in bracket. Okay. और जो मिसिंग टर्म है आपके पास बीच में, जो हमने यूली ब्रैकेट फाइंड आउट करनी है, प्लीज राइट डाउन इन सम वे. सपोज कर लो कैपिटल ए है वहां पे. I'm not using capital X because वो X की भी confusion हो जाती है कि वो साइन है या फिर X है, क्या है. I'm using capital A. Something is to be subtracted from this to get this. तो फिर करने वाले हो अभी इसमें से क्या माइनस करोगे, क्या प्लस करोगे. That is to be what? Anybody? Lotus section, Rajveer. Don't tell me answer. Okay, just tell me करना क्या है इसके बाद.
What should we do? यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे आप? Rajveer is present. Not coming. Who else from this section, Lotus section? Prabjot Kaur. But don't feel shy in coming forward, okay? नहीं आएगा तो we are discussing here. आपको इसलिए बुला रहे हैं कि पता चले कि how much you know. Yes बेटा, can you tell me किसमें से क्या माइनस करना है या प्लस करना है, क्या करना है अभी? किसको किसमें से प्लस करना है, क्या करना है, कौन सी एक्सप्रेशन को? ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, क्या करना है इनको? Okay, if you don't know, please sit down. Sit down. बेटे इन क्वेश्चंस में आप क्या करते थे? अगर आपके पास नंबर्स हैं, व्हाट डू यू डू? सपोज मैं ये वाला परफॉर्म कर रही हूँ, 20 में से what should we subtract to get 17? So what do? You bring 17 on this side and take x on other side because हमें तो x निकालना है. ट्रांसपोजिशन आपने सीखी हुई है 7th में. Okay, we have to find x, so we'll take x on the other side. उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा and 17 we are taking on the left side ताकि वो इधर आके साइन चेंज हो जाए उसका. वहां पे प्लस था, जब ट्रांसपोज किया तो इधर 17 हो गया. सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. लेट अस टेक a on the other side because a पॉजिटिव बन जाएगा. Okay, and bring this whole expression on this side. So it will be 3a square minus 4b square plus 5ab. Lip sync karo. When you do lip sync, you don't make any mistake. Mind में बोलो quietly. Okay, and you know we subtracted this 17 को इधर आके हमने subtract किया था. यहाँ भी हम पूरी की पूरी expression को minus करेंगे. जो रूल अब बेटा आप नंबर्स के लिए लगाते हो, सेम रूल हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए ही चलेंगे. कुछ ये नया रूल नहीं आ रहा है यहाँ पे. अदरवाइज ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, कोई भी क्वेश्चन कभी मुश्किल लगता है उसको एक नंबर के फॉर्म में परफॉर्म करके देखो कि ऐसा होता तो हम क्या करते. नाउ यू नो वेरी वेल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था एंड यू विल गेट द मिसिंग पॉलिनोमियल. एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी. प्लीज स्टार्ट डूइंग नाउ. Follow the first step. I told you. First step is open the bracket. Open the bracket. बाहर नेगेटिव साइन है. टेक केयर. वी हैव टू पुट एन एरो. एरो क्या करने वाला है? It is going to change all the signs in between the bracket. Start doing. Very good. Everybody. Give your pen. पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, राइट? डू इट एंड मैच फ्रॉम द बोर्ड. करते रहो इसको और मैच करो. इट विल चेंज ऑल द साइन. इट विल बिकम प्लस a square plus b square and minus 6ab is equal to a. मैथ्स में you should know the art of writing. Okay, to avoid any mistake. Now we have opened the bracket. Now next step क्या था हमारा? What was that? क्या लिखा था? Bring the like terms together. So bring them. 3a square, a square. Underline करो. आप भी underline करो इनको. You will come to know कि a square कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है. They are far off from each other. Okay, we have to bring them together. ताकि कुछ मिस ना हो जाए. 3a square plus a square. b square वाली कौन सी टर्म्स है? 1, 2 minus 4b square plus b square. The way I am speaking, you also speak in mind. Then it is 5ab minus 6ab.
You have seen सब lines के सब terms के नीचे underline आ चुकी है. We have taken all the terms. कोई term आपकी miss नहीं हो रही. You know, this is art of doing. For avoiding your mistake by doing this step. Now you can add them and see which option is matching. Sulfur section, Pavandeep Singh. Please मेरे को बताओ इसकी option. Add them and tell me what option is matching. C option. C option. Who got C option? Please raise your hand. Very good. Very good. काफी बच्चों ने कर लिया. C option is correct answer. तो MCQ मुझे पता है कई बच्चों ने orally भी कर लिया होगा, mentally कर लेते हैं, कई बच्चे fast होते हैं. You know, I am doing this all things over here. I am doing this step because ताकि आपकी जो long questions आते हैं उसमें mistake ना हो. कि अगर आप रूल फॉलो करते हो कुछ भी करने में, गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स में कोई भी आप गेम खेलते हो, तो आपको रूल फॉलो करोगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी. आपकी फोकस क्या होगा? टू विन द गेम. सिमिलरली हियर योर फोकस इज टू स्कोर गुड मार्क्स, टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा. पहले ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर नाइसली उसके साइन देखो एंड देन राइट द आंसर. ठीक है बेटा, सेम रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव कम टू नो हाउ टू डू. ठीक है, you can perform any kind of question, I know. Right? Now I want to tell you something about multiplication also. Multiplication आपकी कैसी होती है polynomials में? Before doing the next question, understand the multiplication also. You keep in mind that addition subtraction में I will never make any mistake because you know the rules how to do. Similarly, in multiplication, you have to follow the rules. Suppose we have a extra question है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है बेटा. Normally एक क्वेश्चन अगर आपके पास आया है ऐसा मल्टीप्लिकेशन का, तो you do it like this. सपोज कर लो हमारे पास ऐसे है 3x² and आपके पास है 4ab है. You are multiplying them, then again you are putting them in bracket. Take care. Again you are putting them in bracket because there were two monomials, different monomials, and they are multiplying themselves. That's why we are not putting sign in between the bracket. Okay. Don't write like this. I have seen many children, they do like this. मेरा तो मल्टीप्लिकेशन साइन फिर भी दिख रहा है. Many students they write like this कि उनका पता ही नहीं चलता कि वो x लिखा है या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन है. तो सम टाइम आपके पास एग्जाम में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी उसको x करके 4ab कर रहे हो, ये भी एक कंफ्यूजन वाला हो जाता है कि कौन सा x है और कौन सा मल्टीप्लिकेशन साइन है. बेटर यू डोंट पुट इट. हाई क्लासेस में जनरली हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्किप कर देते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं, या फिर ब्रैकेट लगा देते हैं सिंपली. Fine. So you know it. We will multiply 3 into 4 first. That is 12. And then we will be multiplying the variables. Variables, they are English alphabets. उनको हम multiply नहीं कर सकते. We cannot say कि A into B कुछ और होता है. They will be considered as AB only. X into X will be considered as X square. X into Y will be considered as XY. We cannot multiply and get some other that. Okay, variable हमारे same as it is रहेंगे, सिर्फ हमने इनको आप numbers को आपस में multiply करना है. That is equal to 12 x square ab या फिर ab x square, whatever you want to write. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे लिखो पीछे लिखो, but they should be in multiplication form. Variables का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. I want to tell you one easy method also of multiplication, that is called grid method. This is new for you. Just for understanding, you should know कि grid method.
एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि ग्रिड मेथड्स मल्टीप्लिकेशन कभी किए आपने? एनीबडी नोज? दिस इज सिंपलर वे एक्चुअली, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होती. लेट अस डू फॉर 34 into 45. उसके बाद हम एक्सप्रेशन भी करेंगे. सपोज हमें 34 into 45 करना है. एक वे तो आपका ये है कि आप सिंपली छोटी क्लासेस में जैसे सीखा हुआ है आपने ऐसे करना है. सिंपली मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हो. ओके और ऐसी मल्टीप्लिकेशन जब तक आप 2 बार नहीं करोगे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस होते. कहीं पे एडिशन गलत होगी, कहीं पे टेबल गलत हो गया एंड सो ऑन. So you should know an easy way. You know 34 we can write it as 30 plus 4 and 45 we can write it as 40 plus 5. जब भी हमारे पास 40s में आता है नंबर, 30s में आता है, 70s में आता है तो मिस्टेक नहीं होती हमारी जनरली. इजी बन जाता है जैसे ही पीछे 0 आता है. So what we do them? We write them in grid form and here we write 40 and 5. फर्स्ट वाला नंबर हमने ऊपर लिख लिया और सेकंड वाला नंबर हमने नीचे कॉलम की फॉर्म में इसको लिख लिया. वी विल बी डूइंग लाइक दिस. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया. यू कैन यूज इन एनी चैप्टर. ये जो ग्रिड मेथड है कहीं भी आप यूज कर सकते हो. ओके मल्टीप्लाई देम. 30 into 40 1200. 40 into 4 60. 5 into 30 150. Then 5 into 4 20. ये लाइंस में आपके लिए ड्रॉ कर दी हूँ, आपको नहीं ड्रॉ कर रही है. ओके यू कैन राइट सिंपली विदाउट लाइंस. लाइंस में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. पहले अब 40 आपका दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपका 5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ. तो जो भी आपके पास नंबर यहाँ पे आए 1200 160 150 20 सबको ऐड करना है आपने. ओके I'm doing on this side 1200 plus 160 plus 150 plus 20. We are adding them all. Okay, this is simpler method also. 1530. This is called grid method. जो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. ओके ये काम आप रफ में कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. ओके अभी तो ये 2 डिजिट का मैंने करवाया है. नेक्स्ट टाइम हम 3 डिजिट का भी करेंगे. आई विल लेट यू नो हाउ टू डू. ओके बेटा, so revise till here. See you next time. You can note down. If you children are writing, they can copy it.